Indra Meghrwal, the child who comes from Rajasthan. Did you know that issue? Yes, it's a tragedy. It's extremely sad that stuff like this happens. I am happy that this got lots of attention. भारत में जो ये दलित बच्चों को मारा गया, ये अंतर्राष्ट्रीय इशू बन गया है। दुनिया के मेजर अखबारों में ये खबर छपी है और यहाँ का मीडिया जो है वो लिपापोती में लगा है। तो लेकिन अमेरिका के लोग समझ गए हैं, इसलिए अब नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। ओबीसी समाज के लोग आज सड़कों पर आए जाति को लेकर, जनगणना करने की बात लेकर। आज इसी के समर्थन में इस मोर्चे में हमें एक नया चेहरा एक अलग देश से था। सबसे पहले मैं आप दोनों का नाम जानना चाहूंगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील सरदार है। मैं सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय महात्मा फुले की संस्था का अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ओके, व्हाट्स योर नेम? Grant McFarland. And which country belongs to you? Like from which country you are? From America. America. Texas. Yeah, Texas. So I would like to ask you first question. You are here in India and you are coming to join this protest. आप यहाँ इंडिया में आए और इस protest को join करने के लिए, I am just translating for my दर्शक as well, right? तो like what you felt, what you actually felt to join this protest? Well, first of all, I joined because my friends have been, they're the ones organizing it. I've known them for at least a decade. And so I support my friends, and I'm very happy for them to be doing the work that they're doing. I enjoy their fight, their demands for a caste census for OBCs to be counted by the government, so that the constitutionally demanded things like protections, reservations, that sort of thing can be implemented properly. And so I'm excited to see these OBCs really stepping forward and beginning to understand who they are within the Indian system. इनका कहना है कि मैं खुश हूँ कि ओबीसी समाज जो है खुलकर अपने हक की बात कर रहा है और स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, जागरूक हो रहा है। My second question is to you, like what you felt when you came here is like, is it a national problem or international problem, like this caste system? Okay, all human rights issues are going to be international issues. India in particular, Dr. Ambedkar said, wherever Indians go internationally, the caste system is going to go internationally. It's going to become an international problem. We are seeing that that's true. We're seeing caste discrimination suits filed in America, in UK, and probably elsewhere. And so all the caste issues are going to be international issues. Yes. तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को हिंदी में बताइए जो भी उन्होंने बोला है, क्योंकि उनको समझने में आसानी है। हमारे भाई साहब जो है ना, ग्रांट, जो पिछले 10 सालों से यहाँ अपना रिसर्च भी कर रहे, पीएचडी भी कर रहे हैं जाति व्यवस्था और यहाँ के महात्मा फुले के मिशन को जानकर वो आए और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारत देश के अंदर की जाति समस्या जो है, ये समस्या जैसा अम्बेडकर ने कहा था कि ये सिर्फ भारत की नहीं, ये दुनिया की समस्या बनेगी, क्योंकि यहाँ का जब भी प्रकाश भारत देश जाता है तो अपनी जाति साथ में लेकर जाता है। ऐसे कई अनुभव, इसलिए अमेरिका में और यूके में जाति व्यवस्था के खिलाफ में कानून बनाने के लिए अभी केसेस दर्ज है और अभी चल रहे हैं। In America, there is the issue of black and white people. What would you like to add on your comment on that? Blacks and whites have, well, first of all, they've done great harm. The whites have done great harm to the blacks historically, and the issues of that are still there in America and elsewhere in the world. Black people have done such a tremendous job of standing up and fighting for themselves and advancing themselves, and they have made tremendous strides. Specific names in America, you might say Martin Luther King or Malcolm X or Rosa Parks, or now you've got President Obama. Just tremendous strides the black community has made, and the black community has learned, has looked at India and has learned from India, and India has also learned some from the black community as well. And it's important that we exchange these ideas and we see what is it that we do, that we support each other, and what can we learn from each other. But then also, India is different than America, and caste is different than racism. And so it's not just copying each other. There has to be intelligent processes in which you say, okay, that worked there, but this is slightly different, so we don't know if it's going to work here. So there's a lot to learn from each other.
We But can say that racism is a big issue in foreign countries, just like casteism is in India. sure, yeah, racism is a big issue in foreign countries. Please like casteism translate is- the last yeah. conversation. ये भाई साहब का कहना है कि भारत देश की जाति समस्या का समाधान के लिए वहाँ के जो काले लोगों ने आंदोलन चलाया था, ब्लैक पैंथर और वगैरह, तो यहाँ के दलित लोगों से, इवन अम्बेडकर से और गांधी जी से भी उन्होंने प्रेरणा ली थी। और वहाँ के लोग, उसकी समस्या वहाँ अलग है, यहाँ उसके बहुत सारे साम्य पॉइंट है, लेकिन इसके विभक्त भी है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से सीख सकते हैं। वो तो बहुत आगे चले गए हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और माल्कम एक्स और तुम्हारे रोज़ा पार्क, ऐसे बड़े बड़े नाम और उनके पढ़ाए जाते हैं। और उनका स्पेशली ब्लैक वीक होता है अमेरिका में, ब्लैक मंथ पढ़ाया जाता है, पूरे मंथ में सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जैसा यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ तो निकाल एक चैप्टर्स, तो वो पढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को मिलाने की ज़रूरत है। और ये करने के लिए अमेरिका के लोगों से भारत के लोग सीख सकते हैं, और भारत के लोग ओबीसी के लोगों से, दलित लोगों से अमेरिका के लोग सीख सकते हैं, ऐसा कहना है। Sir, before a few days, if you heard about that Indra Megharwal, the child who comes from Rajasthan, did you know that issue? Yes. The children who got drink the water of the teacher, and the teacher belongs to a upper caste society. That's why he killed that student. What would you like to add on your comment? Well, it's a tragedy. It's extremely sad that stuff like this happens. I am happy that this got lots of attention because stuff like this happens a lot in India. I don't know why this specific story got so much attention, but more attention should be given to the more stories that are out there. Our hope, our prayer, our work is for fraternity. It's for love between the caste reconciliation. So, it's not about fighting against any one caste. It's about reconciling the castes together. This is our hope. This is what we work for. Yeah, and incidents like these coming from all over the country is a big issue, because just because you belongs to a lower society, lower caste, you are supposed to kill because of drinking water. Is it? This is setting a bad example for the society. Don't you think so? Yes, a bad example. Yeah, I would call the killing of a student in the school for touching the water a very bad example. Yes. Yes. Sir, ये translate. भारत में जो ये दलित बच्चों को मारा गया, इसी घिनौना 75 के साल में भारत के आज़ादी के, ये इससे 72 इंसिडेंट कोई हो नहीं सकता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू बन गया है। दुनिया के मेजर अखबारों में ये खबर छपी है, और यहाँ का मीडिया जो है वो लिपापोती में लगा है। तो लेकिन अमेरिका के लोग समझ गए हैं, इसलिए अब जो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि इवन मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे गांवों में आज भी दलित वो पानी नहीं भर सकते। वही महाराष्ट्र के कुछ गांव में हो रहा है। तो अभी ये इशू बनकर सामने, ये समस्या, पानी की समस्या, ये बाबा साहब ने इसके ऊपर तो आंदोलन किया था। उसका नाम है महाड़ का आंदोलन, जहां उन्होंने कुत्ते पानी पी सकते थे, भैंसे तैरते थे, लेकिन दलित वहां स्पर्श नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसी दिन वहां जाके 25 दिसंबर 1925 में वहाँ आंदोलन किया और स्पर्श किया पानी को, महाड़, जहाँ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बड़ा वो बनाया है वहाँ स्मारक। तो पानी की समस्या आज की नहीं है, पानी की समस्या बाबा साहब ने शुरू की तब से लेकर आज तक वैसी बनी हुई है, और इसको कम होने का नाम नहीं रहा। जब तक जाति जाएंगी नहीं, जब तक जाति जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये समस्या भारत की नहीं पूरी दुनिया की होगी। इसलिए अमेरिका के कई संस्थाएं इस पर काम कर रहे हैं। Do you know who is B.R. Ambedkar? Oh, yes. Yeah. Yes. Do you know what ideology he said to the constitution? He always wanted to make a India which is where there is no inequality, there is no jat path, no casteism. But now you can see, after 75 years of like independence, you can see these types of incidents are happening in India. What would you say? Yes, Dr. Ambedkar, he's the chairman of the Constitution Drafting Committee. He's credited with the Constitution. The preamble is his, and yes, equality, liberty, fraternity. These are the ideals. But he was well aware that India, if it has an undemocratic society, you can't just throw a democracy on top of it.
and the caste system is just fundamentally opposed to the philosophy of the Constitution. And the caste system is not a legal issue. You can't legalize it away, and that's Dr. Ambedkar was well aware of that. I believe that's one of the primary reasons for his conversion in Nagpur to Buddhism. He felt that conversion Buddhism was part of the solution for this democratic society, this social democracy, as he said. I thought that was your wire. Yes, things like this continuing to happen in a democracy makes sense, because as long as the caste system is there, things like this have to happen. That's how it works. भाई साहब ने कहा है कि ये समस्या जो है बाबा बहन का सवाल था कि बाबा साहब को कितना जानते हो, तो बाबा साहब के सारे किताबें पढ़ने के बाद में और भारत देश के संविधान के आर्किटेक्ट ये रहे हैं, उनको पता था कि हाँ, संविधान के निर्माता, उनको पता था कि भारत देश की लोकशाही का फल आखिरी आदमी तक तब तक नहीं जा सकेगा जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बहुत सारे क्लूज दिए, लेकिन आखिरी में उनको भी धर्मांतर करना पड़ा और वो खुद जाके बुद्धिस्ट हुए, जहाँ समता की ममता की बात की जाती है। तो उनको पता था ये संविधान के द्वारा भी, जिस दिन संविधान किया है, हम तो वोट तो दे सकते हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता भी आई नहीं है, तो उनके बात पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर ओबीसी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द बाइट। एक विदेशी आदमी ये समझ गया कि इस देश में जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए, कि कब इस देश के लोग जागरूक होकर अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे और सरकार से कहेंगे कि भैया जात पात हटाओ, विकास लाओ, रोजगार की बात करो और समानता की बात करो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनता लाइव।